You are not audible, Shaista. Please unmute. Yeah. Hello, ma'am. Good afternoon. I'm Shaista Akhtar, Research Scholar of Department of Philosophy at Aligarh Muslim University. It's an immense pleasure to present my topic. The title of my topic is Eightfold Yoga Patanjali, a Philosophical Analysis. Yoga philosophy is one of the six major orthodox schools of Hinduism. A systematic collection of ideas of yoga is found in the Yoga Sutra of Patanjali. The value of yoga as an important method of realizing the spiritual truths of Indian philosophy has been recognized by almost all the Indian systems. We have clear evidence of the recognition of yoga practice even in the Upanishads, the Sumatras, and the Puranas. So long as the mind or the intellect of a man is impure and unsettled, he cannot properly understand anything profound that's spiritual. The practice of yoga is the best way of self purification. That's purification of the body and the mind. Hence, it almost all the systems of Indian philosophy insist on the practice of yoga as necessary practical side of a philosophy of life. The word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, which means union or communion. That's union of the individual soul with the universal self. That the idea of a Vedanta and a Bhagavad Gita. But Patanjali does not use the word yoga in this sense. He said the word yoga does not mean union but spiritual effort to attain perfection through the control of the body, mind, and the senses, and through the discrimination between Purusha and Prakriti. The yoga system is the yoga philosophy is an invaluable gift of the great Indian Sikh Patanjali to all bent upon spiritual realization. The yoga is closely allied to the Sāṅkhya system. It's the application of the theory of the Sāṅkhya in practical life. The yoga system mostly accepts the Sāṅkhya epistemology and admits the three pramanas, a perception, inference, and testimony. It accepts the metaphysics of Sāṅkhya with its 25 principles, but believe in God as the supreme distinct self from other selves. The special interest of this system is in the practice of yoga as the sure means of attaining Vejjana or discriminative knowledge, which is held in the Sāṅkhya as the essential condition of liberation. Yoga means the cessation of mental functions or modification. It does not mean any kind of contact, as I already said. Patanjali has given the sequence of 8 aspects practice ending with samadhi to reach the ultimate goal of spiritual life. In the contemporary world, we understand yoga in terms of asanas and the spiritual postures, but it was not like always this before. The word yoga or asanas never exists alone. This is where the older texts like Yoga Sutra of Patanjali to understand the true essence of yoga, how it was performed in classical India, which was spiritually evolved. Patanjali has divided his Yoga Sutra into 4 parts. The first is Samadhi Pada. The state of the Samadhi Pada is talked about as a tool to achieve liberation of moksha in this life. The author repeats the means of achieving this state of Samadhi in this state. The second chapter contains Sadhana Pada, which deals with Kriya Yoga as a means of attaining Samadhi. The third chapter is Vibhuti Pada, which talks about manifestations of powers that are normally and are only acquired after much disciplined practice of Astangic Yoga. The fourth chapter contains Kevalya Pada, which is primarily talk about emancipation from the world and the ego, and finally gets liberation. Now I throw some light on the 8 limb of yogic meditation, Astangic Yoga. The word Astanga is a Sanskrit word in which Ashat, which means 8, and Anga, which means limb. So literally means 8 limbs of yoga. The first one is Yama. Is the first step or propound in Astangic Yoga, and it's about morals and ethics of how one should behave in the society. There are 5 Yama or ethical rules are as under Asama. Ahimsa, which means non-violence. Satya means you have to speak the truth. Astya means you have to follow the principle of non-stealing. Brahmacharya means controlling his sense. Apagraha, which means to be non-possessive for material gains. Second is Niyama. Niyama, the another component of Astangic Yoga, which includes rules for possessing good conduct. There are 5 niyamas are as follow. Swachh or purification of the body, internally as well externally. Santosh is understood as contentment. It means to satisfy with oneself whatever one
Ateens are possessed. Tapas or penance includes the power of tolerance. Uh, Svadhyaya, it means one needs to purify religious scriptures to develop his or her spiritual knowledge. And last one, Ishwar Pradhan. It only always remember God is the supreme authority and only mighty. Asana, it speaks about to do various bodily postures which help to retain concentration of chitta and even help to control the body as well as mind. Pranayama means you have to control the breath, inhale as well as exhale. Pratihara means you have to withdrawing the senses from their object to external objects. And dharana means attention, or we can say fixing the mind on the desired object. And dhyana or meditation means the flow of thought about or around about the object of attention. It is a steadfast contemplation of the object without any break or disturbance. And last one is samadhi, is the name of condition to be passed through before reaching deliverance. Since the yoga insists on attaining freedom through samadhi, is defined as yoga samadhi. It is the ascetic condition in which the connection with the outer world is broken. Lastly, I conclude at present, when we more focus on excelling in yoga asanas, Patanjali Yoga Sutra come as a reminder to all that yoga is a way of life with a sole objective to attain that realized knowledge, where one can differentiate between what is self and what's not, and also bringing the cessation of moments in the mind. Patanjali has given us an amazing and crystal clear roadmap towards Kaivalya through his sutras, yet the duty lies entirely upon us to follow it with the twin eye of Abhyas and Virga. For that is the only way that we attain our goal of absolute liberation once and for all. It's important that we should remember his warning which stop towards the spiritual reach for that highest state of liberation. In Yoga Sutra, Patanjali formed a certain practical method of purification and self-control for the realization of the truth self of man, both from a theoretical and practical standpoint. It occupies a better position than the Sāṅkhya insofar as it admits the existence of God and relies mostly on actual experiences to carry conviction to its followers. Thank you. Hope you like my presentation. Thank you, Sharifta. And next, I would request Srivastava Mishra, research scholar from the Department of Philosophy, B.H.U. Are you there, Srivastava? Yes, ma'am. Namaste. Okay, I'm you here. can start your presentation, but you have 5 minutes. So Okay, ma'am. I will take only 2 minutes only. Thank you, ma'am. Actually, I am Department of Veda, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sāṅkhya. There was some mistake, I think. And am I audible, ma'am? Na? yes, you are audible. Okay. Thank you, ma'am. Actually, my paper presentation topic is a concept of Sāṅkhya Yoga, and I think everyone is the expert of this subject. So shortly, I will try to present my paper. I will start right now. The Sāṅkhya system of Kapila is said to have been existing during the 7th century BC. However, some scholars say like that. And the system is most notable for its theory of evolution and for its dedication of the numerous categories of Nyaya and Vaisheshika to two fundamental ones, namely Purusha and Prakriti. I want to say that some people translate Prakriti as nature, the former being understood as universal awareness and the latter as universal energy. Prakriti is often translated as nature. However, it is clear from the writing that the wider and larger definition, the creativity energy, what is meant by Kapila when he uses it. For him, nature is a part of the universal energy, I can say that. The universal energy has three modes of gunas. As a Sāṅkhya, we also studied about that. Modes of the gunas of manifestation according to the Sāṅkhya. As explained in chapter 8, we know that there are the Sattva, Rajas and Tamasa. Tamas indicates interior, Rajas indicate activity, and Sattva is equilibrium of the two. Everything that we see or experiences in this world is the combination and recombination of these three gunas. When these three universal vibrations are held in equipoise, there is no action according to the theory.
and it is only when there is a disturbance of equilibrium then evolution begins. Universal energy of prakriti, as we call nature, is unconscious, and it's only through the presence of the conscious purusha that evoluting begins. The process of the evolution then follows the hierarchy of 23 categories of tattvas. And in Sanskrit, tattva it literally means thatness, we can say that. Mahat is the first product. It is not material, but a mode of energy, and is based in the basis of buddhi, mahat, we can say that, or universal intelligence. Just as we have in the Upanishadic philosophy distinguish between universal self, Brahman, Brahma, as we say, and individual self, Atman. Through there is no individuality attached to the Atman, the Sāṅkhya finds it convenient to designate universal intelligence by Mahat and individual intelligence by Buddhi. Buddhi is that mode of the energy that operates as intelligence, and it is basis of all mental processes. Next in the hierarchy is ahankara, we can say, or ego, the self sense. Three branches of evolution arise from ahankara. From sattva aspect evolve manas or mind. The five organs are perception, five organs or instruments or actions. From its tamas aspect evolve the subtle elements of the nature, namely either air, fire, water, and earth, as well as corresponding sensory vibration of sound, touch from the taste, form, taste, and smell. The Rajas aspect provides the energy for this evolution. And I will conclude probably right now. According to the yoga philosophy, all spiritual personalities of history have either attained this state of mind or have approximated it. Without a systematic scientific discipline, some have stumbled upon it. Others have approached it more scientifically. As we can say that, in conclusionally, I want to say that the yoga philosophy is in says a science of human mind. Much of the treatise to directed towards describing method of attaining higher states of awareness. Yet Patanjali cautions that our approach must be scientific, guided by the region and experiences. Its remarkable insights into the working of the human mind, its practical techniques can be applied by everyone in their physionic journey of ultimate understanding. Later, the system be absorbed into the Vedanta philosophy as part of fourfold yoga, already encountered briefly in the Bhagavad Gita. It's shortly my presentation, ma'am. Paper is too long. I already submitted that. Thanks for this opportunity, and thank you so much for that, ma'am. Thank you so Thank much, you. Rajit ji. And next, I would request Rishikesh Chauhan. Please start your presentation, Rishikesh ji. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible, Rishikesh. Myself, Presided, Research Scholar, Department of Philosophy and Religion. My topic is the notion of Abhyas and Vairagya in Yoga philosophy. The history of yoga practice is very ancient in the Indian tradition. The importance of yoga has been discussed in the Upanishad, Gita, and Jainism and Buddhism. However, it was established as a coherent philosophy theory by Maharishi Patanjali. There is a close association between the Sāṅkhya philosophy and yoga, due to which both the philosophy called the allied system. Patanjali arranged this his yogic idea on the metaphysical background on the Sāṅkhya philosophy. Of the Sāṅkhya philosophy, yoga is the application of the principle of Sāṅkhya philosophy in practical life. According to both the philosophies, the basic aim of life is attain salvation. Sāṅkhya believes that the destruction of bondage is possible through knowledge of wisdom. It is a philosophy that brings Sāṅkhya views in practice and civilization. In this way, one can realize the highest good of this life as he, and it reveals the reality of man and the world. Sāṅkhya believes in salvation by pure knowledge, but yoga by doing something. Philosophically, yoga means the union of us, the supreme spirit. In the Yoga Sutra, Patanjali described yoga as chitta vritti nirodha.
in the Samadhipad, second sutra. Means yoga is the sensation of mental activity. In this world, we have so many different kind of suffering. Generally, there are three different kind of suffering: adhyatmic, adhibautic, or adhidhavik. Suffering is an inherent aspect of human life. The kleshas are considered the cause of suffering in yoga philosophy, and these applications distort our mind and our pers- perception, affecting how we think, act, and feel. Sāṅkhya tried to explain the individuality of people through his theory. Man first identifies himself with the body and the ego. Due to ignorance, it fails to distinguish itself from the mind and the intellect and own them as a part of itself. So much so that is identify itself with the body, the sense, the mind, and the intellect. There are five applications as the cause of our suffering: avidya, asmita, rag, dvesh, and abhinivesh. These properties are interdependent affliction or causes of all misery in life. Avidya is the most important of these and root the cause of suffering because from it all other trouble arise. There, there is some main sutra of Yoga Sutra regarding this topic. Abhyas Vairagya Tanirodha. Abhyas Vairagya Bhyam Tanirodha means the sensation of this intense mental activity is accomplished through repetitive practice and dispassion. By practice and detachment, this can be stopped. Patanjali Yoga procedure is twofold, consisting simultaneously of Abhyas and Vairagya, and repetitive practice and dispassion. Second, 13th Sutra of Samadhipad, Tatra Isthito Yatno Abhyasa. Abhyas is the effort to achieve stability. Practice is the sustained effort to rest is in that stillness. Abhyas repetitive practice and vairagya dispassion toward the objective world, the gunas, and ultimately even toward the process of yoga itself. 14th Sutra of Yoga Abhyas regarding this topic. Satu Dirghakala Nantarya Satkar Sevito Dirghavi. It means it is firmly grounded, it's performed attentively and necessarily for a long period of time. That practice, when continued for a long time without a break and with devotion, become firm in foundation. 15th Sutra of Yoga Sutra, part first, Drishta Nusravik Vishay Vitrisha Vasikar Sāṅkhya. This means dispassion is thirstlessness toward object seen and heard, which is a sign of control. When the mind loses our desire for object seen or described in the scripture, it acquires the state of utter desirelessness, which is called detachment. There is therefore a detachment at the level of the senses must precede vairagya or disengagement at the mind level. 16th Sutra of Samadhipad. Tat param purusha khyate guru pratishanam means indifference to the gunas or the constituent principle achieved through the knowledge of Purush is called paravairagya, supreme detachment. Patanjali defines vairagya in two phases. The first step would be practice the opposite of objectification. An intense of Patanjali cultivating the opposite method. Please wind up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wind up करें. Okay, ma'am. Moreover, paravairagya is different. There are two types of vairagya. Vairagya is different than lower vairagya. Regarding this, Kasi Bhattacharya said they clarify the difference between the two vairagya, the lower and the ultimate. And he writes that paravairagya is detachment not only from the object of mind but also from the mind itself as the object. From the mind, even its final actual state of vivek.
In order to follow yoga practice, we must know about the mental state. Chitbhumi, these are 5, and last 2, Ekagra and Niruddha, are the yoga friendly because they have predominance of subtle component which help in self realization. There are 8 limbs in yoga philosophy for the purification of mind. The ultimate goal of yoga should be realization. There Patanjali suggests that since take place through repetitive practice and discussion. He adds or through devotion and to swear in reading the word implies an acknowledgement of another yogic method besides of Patanjali, its own Abhyas and Vairagya. After classifying and explaining the difference between the which modification of mind may assume, the two means bring about the suppression of this modification. These are practice and detachment. Two simple words have full significance. A yogi believes in that there is calm, peaceful, and pure awareness residing deep with all being. By riding, overcoming ourselves of our kleshas, we are able to clearly see the reality of world and let our true nature shine brightly. A contemporary Guru Ramana Maharshi attempt to clarify the notion of Abhyas or more precisely Yoga Abhyas. According to him, the passage from Pravritti to Nivritti. ऋषिकेश, I think Abhyas and Vairagya. Yes, ma'am. प्लीज आप wrap up कर दीजिए पेपर को. Thank you so much, ऋषिकेश. And next, I would request Vaishali Srivastava to start her presentation. Are you there, Vaishali? Vaishali? Ma'am, yes, ma'am. Vaishali, please start your presentation. Yes, ma'am. आदरणीय विशिष्ट Vaishali, you have 5 minutes. So you have Okay, to. ma'am. Okay, ma'am. Please, it's my humble request to stay Okay, ma'am. within the allotted time, please. Okay. आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, माननीय विभागाध्यक्ष महोदय, समस्त शिक्षक गण एवं अन्य सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं वैशाली श्रीवास्तव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग में शोधरत हूँ. मेरे शोध पत्र का विषय अष्टांगिक योग के द्वितीय साधन के रूप में नियम के स्वरूप एवं उपयोगिता पर आधारित है. योग एक ऐसी विधा है जिसके विषय में वाद विवाद का कोई स्थान नहीं. योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है. यह एक ऐसी साधना पद्धति है जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है. योग के द्वारा ही सृष्टि के गुणतम रहस्यों को जाना जा सकता है. महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योग चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है. योग का अंतिम उद्देश्य समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है. सांख्य दर्शन के समान योग दर्शन में भी यह माना गया कि बंधन का मूल कारण अज्ञान है. प्रकृति व पुरुष के भेद का ज्ञान न होना अज्ञान है. इसीलिए योग दर्शन में मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है. ज्ञान की प्राप्ति तब तक संभव नहीं जब तक चित्त स्थिर न हो. इसके लिए योग दर्शन में अष्टांगिक योग का वर्णन प्राप्त होता है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि है. अष्टांगिक योग का प्रथम साधन यम, जो मनुष्य के आचरण को, व्यवहार को शुद्ध करता है. यम का मुख्य उद्देश्य साधक को हिंसा, असत्य, स्तेय आदि कर्मों में प्रवृत्त होने से रोकना है. यम का पूर्णतः पालन कर लेने पर अच्छे संस्कारों का उदय होता है. यम के पश्चात अष्टांगिक योग के द्वितीय साधन के रूप में नियम का स्थान है. यम के साथ नियम का पालन भी आवश्यक है. यम से व्यवहार शुद्ध होता है और नियम से साधक में आंतरिक अनुशासन आता है. नियम का लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधानानि नियमा, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये 5 नियम कहे जाते हैं. नियम शौच अर्थात शुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य शुद्धि एवं आंतरिक शुद्धि. मधुर वचन बोलने से, शुद्ध भोजन, स्नान आदि से बाह्य शुद्धि होती है. अंतःकरण से उठने वाले भावों को अभ्यंतर शुद्धि कहते हैं. मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा भावों से, जो मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा भावों से आती है. नियम का दूसरा रूप संतोष है. उचित प्रयास से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने को संतोष कहते हैं. योग सूत्र में कहा गया है कि चित्त में संतोष का भाव प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को उत्तम सुख, आनंद की प्राप्ति होती है. सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करना तप है. तप के द्वारा क्लेशों तथा पापों का क्षय होने पर शरीर में अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां आ जाती हैं और इंद्रियां सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती हैं. स्वाध्याय का अभिप्राय साधक द्वारा विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर उसके सार भाव को ग्रहण करना एवं अपने योग मार्ग को प्रशस्त करना है. महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग. स्वाध्याय या प्रणव मंत्र के उच्चारण से, साधना एवं जप करने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं. नियम का अंतिम रूप ईश्वर प्राणिधान है.
महर्षि पतंजलि ने कहा है, ईश्वर प्राणी ध्यानाध्वा, अर्थात ईश्वर प्राणी ध्यान से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि की सिद्धि हो जाने पर योग मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को ईश्वर दूर करते हैं। जो ईश्वर में भक्ति करते हैं उनकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अर्थात उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधक द्वारा स्वयं के व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियम कहलाती है। नियम आत्म अनुशासन है, जिसकी उपयोगिता कुछ नियमित अनुष्ठानों द्वारा चित्त को स्थिर करने में है। नियम के 5 रूप साधक की आंतरिक शुद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें पवित्रता, सात्विकता, शांति के भाव का संचार होता है। इन पंचविध नियमों को क्रिया योग भी कहा जाता है। एकाग्रचित्त मनुष्य तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि का लाभ शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, किंतु विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्य क्रिया योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Vaishali. And next, I would request Anshu, a research scholar from Department Pulmonary Medicine, AIMS, Rishikesh. Anshu, are you there? Okay. Yeah. You're not audible. Please unmute yourself. Unmute. You are muted. I'm audible, ma'am? Now you are audible. Anshu, you can start your presentation. Okay. So, my topic is effectiveness of Yoga Nidra in stress and anxiety, a review. Okay. So, Yoga Nidra is the probably best known technique to induce complete physical, mental and emotional relaxation. Yoga Nidra is a state of consciousness which is neither sleep nor awaken, neither is a concentration or hypnotism. It can be defined as an altered state of consciousness. According to Markandeya, Yoga Nidra is a state of deep relaxation, as Lord Vishnu himself uses this marvelous technique. Maharshi Markandeya, according to his visualization, state in his text Markandeya Purana that at the end of Kapa, when the entire universe was in a deep relaxation, Lord Vishnu was lying on the bed of serpent in the state of Yoga Nidra. The practice of Yoga Nidra brings alpha dominance in the brain, which is characterized by mental relaxation. A significant decrease was observed in breath rate after isometric relaxation technique and reduction in some physiological signs of anxiety. Yoga Nidra is originated from the ancient Tantric era. It is a state of inner awareness combined with a complete muscular, mental and emotional relaxation. The body is relaxed while the mind is awake. The system was constructed by Swami Ananda Saraswati, who is author of 80s over books including Yoga Nidra. The deep relaxation technique is a tool in controlling disease caused by tension such as hypertension, insomnia. It is used for eliminating stress, solve problems and interpersonal problems, resolve trauma and neutralize and overcome anxiety, fear, anger and depression, as it is a systematic method to establish harmony and well-being. Practice of Yoga Nidra is the simplest method of relaxation, which is generally being practiced in the flat lying position of Shavasana, corpse pose, and follows the spoken instructions of the yoga teacher. The subject lies supine with legs apart, arms are kept with palms facing upwards, eyes slightly closed, breathing is natural and quiet. It is also a very powerful and effective technique to achieve a total self-transformation and get rid of negativities. It does not require any belief or faith as a preconditioning for it to work effectively. So what is stress? Stress is an emotional strain term related to health, applied a wide range of strong outwards or superficial stimuli, both physiological and psychological. The two types of stress, eustress and distress. Any factor that causes stress is called a stressor. Stressors are two kinds, namely processive stressors and systematic stressors. A kind of mental illness is such an organic disorders. Types of stress, eustress, positive stress, and distress, negative stress, roughly mean challenges and overloaded. Both type may be the result of negative or positive events. If a person wins both the big prize and has a beloved relative die on the same day, one event does not cancel the other, as both are stressful events. When the word stress is used alone, typically it is referred to distress.
And what is anxiety? Anxiety are mental disturbance in which a person experiences unreasonable fear, like the generalized anxiety, phobias, panic disorder, obsessive compulsive disorder, and dissociative disorder. Generalized anxiety is a persistent fear without obvious cause, which includes muscle tension, nausea, rapid heartbeat, and hot or cold spells. Phobias are persistent, strong fears of certain objects or situation. Common phobias include agoraphobia, fear of large open space, and claustrophobia, fear of small enclosed spaces. Panic disorder is a sudden intense feeling of fear. Symptoms include shortness of breath, rapid heartbeat, and dizziness. Obsessive compulsive disorder is characterized by illogical and uncontrollable impulse that result in obsessions or compulsions. Anxiety disorder are marked by excessive fear, often is response to specific objects and or situations, and in the absence of true danger, and they are extremely common in the general population. Anxiety is a condition of worry, tension, uneasiness produced by the anticipation of some danger whose source is largely unknown. So how Yoga Nidra affects stress and anxiety? Earlier studies showed a positive impact of Yoga Nidra on anxiety, stress, and depression. Further, it is evident that Yoga Nidra was effective in maintaining physical and psychological health in middle-aged individuals. These studies suggest that Yoga Nidra is a useful technique for all age group people who are suffering for many psychological issues. Okay. It's again. Nevertheless, Yoga Nidra is probably the best known technique to induce the complete physical and emotional relaxation. Yoga Nidra is a state of consciousness which is neither sleep nor awake, neither it is concentration or hypnotism. So we have conclusion. Okay, conclusion. Yoga Nidra can be considered as an effective non-pharmacological practice for reduce stress and anxiety, which starts best effect within every short time duration. In this review, we find that Yoga Nidra is a powerful technique to induce complete physical, mental, and emotional relaxation. The ultimate object of Yoga Nidra is to combat the stress influences and rectifying the imbalances by stress management. Thank you. Thank you so much, Anshu. It was really a very interesting paper, and I also work in this area, so I'll be in touch. And next, I would request Ramesh Kumar, PhD scholar, Department of Pharmacology, AIMS Rishikesh. Ramesh, are you there? Ramesh Kumar, are you there? Okay, it seems he's not there. So next, I would request V. Ramachandran, Samskriti Surabhi, Sanskrit Bhasha Prachana Kendra, Kanchipuram. Are you there, V. Ramachandran? Okay. So next I would request Pooja Tripathi, a research scholar from Department of Philosophy and Religion, B.H.U. Pooja Tripathi, are you there? Pooja Tripathi. You are not audible. You unmute yourself. Unmute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yeah, Okay, ma'am. Vaishali, is this your Pooja? यस मैम एक्चुअली मैम मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, मैं डिपार्टमेंट में ही हूँ और मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो मैंने वैशाली का फोन लिया. ओके मैम. ओके मैम. ओके, आप बात करें. 5 मिनट्स है वैशाली पूजा आपके पास, ठीक है? ओके मैम. मेरा विषय योग का 8वां अंग समाधि है. जैसा कि हम जानते हैं कि योग का भारतीय जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर योग का वर्णन मिलता है. महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योगस्य चित्तवृत्ति निरोध अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध कहा है. भगवद गीता में योग का वर्णन इस प्रकार है. तद विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है. वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ जीवात्मा का ज्ञान पूर्वक संयोग होता है.
इस प्रकार योग का अर्थ परमात्मा का जीवात्मा के साथ संयोग है, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग के लिए योग के 8 अंग बताए गए हैं। वे 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वे समाधि योग की अंतिम सीढ़ी है जिस पर हम उपयुक्त 7 अंगों का पालन करते हुए पहुंचते हैं। इसमें प्रारंभ के 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है और अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। जैसा कि मैम हम जानते हैं कि जिसमें यम और नियम नैतिक साधना से संबंधित है और आसन, प्रत्याहार, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का कार्य चित्त को बाह्य विषयों से हटाना है। धारणा, ध्यान, समाधि ये एकाग्र के विभिन्न रूप हैं। लेकिन मैम अगर हम समाधि पर ध्यान अपना केंद्रित करें, जिससे समाधि का क्या तात्पर्य, जब ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है और जब ध्यान ही ध्येय बन जाता है और जिसमें मैं की सत्ता भूलकर ध्येय से एकाकार हो जाता है, यही समाधि है। इसमें जीव का बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है, वह कालिक, सोपाधिक और परिवर्तनशील जीवन से ऊपर उठ जाता है और एक सरल और नित्य पूर्ण जीवन जीता है। संप्रज्ञात समाधि के मतलब समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि ध्यान की पहली सीढ़ी है जिसमें ध्यान को ध्येय का ज्ञान होता है और इसमें इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, सवितर्क, सविचार, सानंद, सस्मिता। सवितर्क में हम हमारे ध्यान का आलंबन सूक्ष्म स्थूल विषय होता है जैसे मूर्ति इत्यादि, और सविचार में हमारे ध्यान का आलंबन सूक्ष्म पदार्थ जैसे बुद्धि, पंच तन्मात्र बुद्धि, अहंकार इत्यादि। और सानंद में हमारे इंद्रिय का विषय सूक्ष्म होता है, इसमें आनंद की अनुभूति होती है और सस्मिता में हमें मैं का ज्ञान होता है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में मैम असंप्रज्ञात समाधि वह है जिसमें ध्यान और ध्येय और ध्याता तीनों का अंतर मिट जाता है और इसमें सूक्ष्म और स्थूल सभी विषयों का अभाव हो जाता है। अर्थात इसमें अनंतर ही व्यक्ति की प्रज्ञा पूर्णतः जागृत होती है और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसे ही योग समाधि कहते हैं। मैम लास्ट में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम समाधि को प्राप्त करते हैं तो उसमें अनेक विक्षेप आते हैं और उन विक्षेपों को हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अब वैराग्य वह होता है जो इहलौकिक और पारलौकिक विषयों के प्रति तृष्णा रहित होना ही वैराग्य है। और अभ्यास किसका करना है? अभ्यास हमें ईश्वर का करना है, हमें ईश्वर का अभ्यास करना है, उस एक तत्व की प्राप्ति करनी है और जिससे ईश्वर प्राणिधान के द्वारा हमें शीघ्र ही हम व्याधियों को दूर करके समाधि को प्राप्त करते हैं। और अंत में कहा जाता है कि समाधि का फल क्या है? समाधि का फल तैत्तिरीय उपनिषद में समाधि का फल बतलाते हुए कहा गया है कि ब्रह्म सत्य एवं ज्ञान स्वरूप अनंत है। समाधि द्वारा उस ब्रह्म को दृढ़ हृदय पूर्वी गुफा में जान लेता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म के साथ आनंद में रहता है। अर्थात यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, यही कैवल्य, यही समाधि है। थैंक यू मैम। Thank you so much, Pooja. Next we have Reema Urao. Reena, आप हैं? Are you there, Reena? Reena Urao, a research scholar from Department of Philosophy and Religion, B.H.U. Yes, ma'am. ठीक है रीमा, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, 5 मिनट है आपके पास, ठीक है? मैं रीना उराव, रिसर्च स्कॉलर। मेरा टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कर्मयोग। गीता के योग शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। प्रथम अर्थ में उत्पत्ति जो है युद्ध है, जिसका अर्थ है निर्णय या वस्तु से संपर्क स्थापित करना। इसके अतिरिक्त योग शब्द का अर्थ आत्मा अथवा ईश्वर पर चित्त को स्थिर रखना। इस मिलन में वियोग भी अंतर्निहित है। यहाँ वियोग का अर्थ भोग इच्छा त्याग तथा फल त्याग है। गीता में योग के मुख्यतः 3 स्वरूप स्पष्ट दिखाई देते हैं।
योगः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समस्ति योग उच्यते। आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य ही समस्ति योग है। इस श्लोक में कर्म योग की आचरण की प्रक्रिया बतलाई गई है। कर्म योग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति होकर आसक्ति का त्याग कर देता है तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाला हर शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि राग द्वेष और वह सिद्धि और असिद्धि में कम रह सकता है। बुद्धि जहाति उभे दुष्कृते तस्माद् योगा कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात इनसे मुक्त हो जाता है। इससे समस्त रूप योग में लग जा या समस्त रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तम विद्या संयोग वियोग योग संज्ञेयम सनिश्चय युक्त योगे निर्गुणा से दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना देखना सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य भी होते हैं फिर भी उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका उन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसकी यह स्थिति ध्यान काल में और उत्थान काल में सदा एक ही रहती है। कर्म का अर्थ स्वरूप एवं आवश्यकता। भारतीय वैचारिक परंपरा कर्म को सृजनात्मक मानती है। सृजन मानवीय हो अथवा देवीय उसका कारण कर्म ही होता है। जिस प्रकार कर्म के बिना घट का निर्माण नहीं हो सकता उसी प्रकार कर्म के अभाव में सृष्टि भी संभव नहीं है। अतः सृष्टि सृष्टा के कर्म का परिणाम है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होते हुए विधि से कर्म को प्रबल कहा गया है। इस प्रकार शुभ कर्म का फल नियत रूप से प्राप्त होता है जिसे कर्म भाग कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्म के 3 भेद संचित प्रारब्ध और प्रेरणा किए जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से कर्म के 4 भेद हैं। नीति नैमित्तिक काम निश्चित किए गए हैं। मैं इसका वर्णन ज्यादा नहीं करूंगी। गीता की कर्म दृष्टि किसी भी पारंपरिक भेद आदि के बंधन से मुक्त है। यहाँ कर्म का परिस्थिति विशेष में अवश्य करने योग्य किया है। गीता में मनुष्य को उसी कर्म का अधिकार प्राप्त है न कि अन्य कर्म का। इसलिए यहाँ एक वचनांत कर्मणि रूप का प्रयोग किया गया है। कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया गीता की दृष्टि से कर्म नहीं है। रण क्षेत्र में अवतरित अर्जुन के लिए युद्ध करना ही एकमात्र कर्म है। यहाँ क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित प्रजा रक्षण दान आदि कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार यहाँ दान यज्ञ आदि कर प्रासंगिक नहीं है। इस प्रकार गीता कर्म परिस्थिति सापेक्ष उस विशेष क्रिया का वाचक है जिसके न करने से व्यक्ति अपने धर्म से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त करता है। कर्म करना मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं अपितु व्यवस्था भी है। सृष्टि प्रकृति का परिणाम है। रुद्रात्मक है। प्रकृति अंगवत गतिशील रहती है। उसकी गतिशीलता सृष्टि में पर्याप्त है। प्रकृति का कार्य होने के फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति संभव और आदि विकारों तथा तत्व आदि गुणों का मूर्त रूप है। प्रकृति से उत्पन्न इन गुणों द्वारा मनुष्य विवश होकर कर्म करता है। यह व्यवस्था क्षण मात्र के लिए भी उसे कर्म से विरक्त नहीं होने देती। मनुष्य यदि गम आदि कर्म न करे तो भी श्रवण आदि कर्म के रूप में क्रियाशील दिखाई देता है। अतः कर्म अपरिहार्य है। गीताकार के शब्दों में पूर्णतः कर्म त्याग शरीरधारी के लिए संभव नहीं है। कर्म के बिना मनुष्य न कोई सफलता प्राप्त कर सकता है और न अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार कर्म मानव जीवन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता है जिसका निर्वाह वह आजीवन करने को बाध्य होता है। इससे न भक्त मुक्त होता है और न ज्ञानी और न सिद्ध पुरुष। विश्व में जितने महान आत्मा हुए हैं वे जीवन पर्यंत कर्म करते रहे हैं। गीता का सकाम एवं निष्काम कर्म योग कर्ता का कर्ममय हो जाना कर्म योग है। जिस प्रकार अग्नि में तपा हुआ लोहा अग्नि हो जाता है उसी प्रकार कर्म में तत्पर करता कर्म हो जाता है। कर्म में कर्ता न अंतः विकारों से प्रभावित होता है और न बाह्य विकारों से वह सांसारिक द्वंद्वों का अतिक्रमण कर देता है।
गीता का कर्मयोग स्वधर्म, सामाजिक कर्तव्य, कर्म का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की शिक्षा देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह अपने वर्ण धर्म के अनुसार सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित के प्रत्येक कर्म को पूर्ण समर्पण भाव से तत्पर होकर संपन्न करे। मनुष्य के कर्म में प्रवृत्ति स्वाभाविक है, किंतु सामान्यतः उसके फल की इच्छा करता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह फल प्राप्ति की बाधा से आशंकित होकर वह उसका परित्याग कर देता है। इसी दृष्टि से गीता के कर्मयोग के साकार के साथ निष्काम कर्मयोग को अधिक प्रसाद प्राप्त हुआ है। गीता के कर्मयोग की दोनों धाराएं विवेचनीय है, जिसे साकार कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग के नाम से अभिहित किया जा सकता है। गीता कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करने को श्रेष्ठ मानती है। कर्म का अभाव व्यक्ति को अशांति एवं अस्थिर कर देता है। कर्म करने से वह शांति और संतोष को प्राप्त करता है। कर्म अर्थात अज्ञानी को तत्परता से कर्म करते हैं। साकार कर्मयोग में भी कर्म तत्परांत रहती है, किंतु उसके पृष्ठभूमि में को कामना होती है। लौकिक या परलौकिक किसी भी इच्छा से कर्म में गंभीरता के साथ नियोजित होना साकार कर्मयोग है। शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषा से अध्ययन करना होता है। उसका ध्यान निरंतर उसी पर रहता है। उसके समस्त कर अध्ययन के प्रति समर्पित होते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में ओके मैम, सभी का कार्य को साकार कर्मयोग करने की स्वीकार्य से कर्मयोग का प्रथम सोपान कह सकते हैं। कर्मयोग का व्यवहारिक महत्व। कर्मयोग एक व्यवहारिक विचारधारा है। इसे जीवन जगत को सार्वभौमिक व्यवस्था कह सकते हैं। कोई भी जीव इससे पूर्णतः मुक्त नहीं है। मान्यता भोग योगियों में जब भी कर्मयोग की सत्ता है, तब कर्म करने के लिए अतिरिक्त मनुष्य उसके बिना कैसे रह सकता है। मानव जीवन से प्रत्येक सफलता कर्मयोग उत्कृष्ट कही जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य लोक में कर्म से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ मनुष्य लोक और कर्म जल सिद्धि से लौकिक सफलता का बोध होता है, जिसे व्यवहार जगत में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कर्मयोग को व्यवहारिक महत्व उस परिस्थिति से स्पष्ट है जिसमें गीताकार ने कर्मयोग का उपदेश किया है। गीता का जो देश युक्त कर्म से विरत होने की इच्छा वाले अर्जुन को कर्म के प्रति कृतज्ञ निश्चय कर देता है। Okay, thank you so much, Reena. नहीं रीना, it's enough already. You have taken enough. अरे हम आपको डिपार्टमेंट में सुन लेंगे, फिर से आप अपना पेपर शेयर करेंगी, सभी आपको सुनेंगे। मनुष्य का जीवन कर्मभूमि है। मनुष्य का जीवन कर्मभूमि है। कर्मयोग से मनुष्य अपने समाज, राष्ट्र तथा विश्व के साथ ही आध्यात्म के साथ संघर्ष हो जाता है। इससे व्यक्ति को अपना लक्ष्य में तीव्रता मिलती है। Thank you so much. Okay, next I would like to request Sumit Pandey, a scholar from our Department of Philosophy. Sumit, are you there? Please present your paper. Sumit Pandey. Yes. सुमित प्लीज आप अपना पेपर प्रेजेंट करें। 5 मिनट का समय है आपके पास। I am Sumit Pandey from Department of Humanities and Social Science, IIT Bombay. My topic is Sāṅkhya in Bhagavad Gita, a way to get liberation. So the second chapter of the Bhagavad Gita, it's Sāṅkhya. This is the most important chapter of the Bhagavad Gita, as Lord Krishna condenses the teachings of the entire Gita in this chapter. This chapter is the essence of the entire Gita. Sāṅkhya can be categorized into 4 main topics. First, Arjun completely surrenders himself to Lord and accepts his position as a disciple and Krishna as his gurus. He requests Krishna to guide him on how to dismiss his sorrow. Second, explanation of the main causes of all grief, which is ignorance of the true nature of the self. Third, the karma yoga, the discipline of selfless action without being attached to its fruit. And fourth one is the description of a perfect man, one whose mind is steady and one point. So the Gita refers to Sāṅkhya 7 times, and it seems beyond doubt that all of these related to Sāṅkhya system. And in verse 18:23, the Gita describes the 5 causes of action at Sāṅkhya. Kritante Praktani Sri Sāṅkhya takes it to mean Vedanta, in which the subject matter to be known or fully samyak stated, and Kritane as that Vedanta in which all further activity is embedded. So Sāṅkhya explains about
thus the Gita recommends the path of renunciation as well as the path of action as external aids for the acquiring fitness for wisdom. The Gita has also adapted the technique of meditation from the yoga system, which it recommends as an internal aid for the realization of God. One who desires to practice yoga should first endeavor to overcome the five impediments, namely desire, breath, fear, and sleep. He would overcome wrath through self-restraint and desire through abandonment of selfish purpose. He should control resoluteness, fear through heedlessness, and cupidity by waiting upon the wife. Overcoming procrastination, he should try to control his mind by practicing meditation, study of scriptures, charity, truthfulness, simplicity, forbearance, purity of the body, mind, and conduct, and subjugation of the senses. When he has made sufficient progress in controlling the senses and mind, he should repair to a secluded place for further practice. Shunning company and eating emotionally, he should disregard all possession and look with an equal eye at things possessed or lost. He should give the same treatment to one who flatters and one who cavils, and should not seek the good of the one or evil of the other. When he practices yoga in this manner for 6 months, he passes beyond the Vedic ritual, beholding all men full of anxiety. The yogi should view with an equal eye a lump of clay, a stone, or a nugget of gold. Even if a person belongs to the lower caste or the fair sex, by following the path as indicated above, he will surely attain to the supreme goal. It will be seen that this account of yoga is very real that contained in the Adhyaya 6 of the Gita. Thus, the process of assimilation of the Sāṅkhya and Yoga tenets in the Vedanta, which had already started into the later Upanishad and the Moksha Dharma, reach its culmination in Bhagavad Gita. So, this is the process to get liberation in Bhagavad Gita through yoga. So, this is from me. Thank you. Thank you so much, Sumit. Next, I would request Shubham Kumar Mishra to present his paper. Shubham, are you there? Shubham Mishra. Yeah, ma'am. आप अपना पेपर प्रेजेंट करें शुभम। जी, 5 जी, मिनट का टाइम है आपके पास। जी, ma'am. Myself, Shubham Kumar Mishra. I am research scholar here, Department of Philosophy and Religion, Varanasi, University. My topic is Sāṅkhya Yoga Philosophy, a view on mind consciousness dualism. So, in the Western philosophical tradition, there is a very prevalent tendency to equate the mind with the conscious self. This tendency is exemplified in the framework of Descartes' meditations, which, notwithstanding the evident criticism this text has received over the centuries, in some senses still provides the most definitive and well-articulated expression of the presuppositions underlying the modern Western conception of mind. Descartes unhesitatingly identifies the referent of the indexical expression I with the cognitive. In contrast to this fairly Cartesian view, I would like to examine an alternative but related version of samstan dualism advanced by two allied schools, darshan of orthodox Hindu philosophy, namely the Sāṅkhya school and classical yoga as expounded by Patanjali. These schools draw a metaphysical dividing line not between mind and matter, but rather between matter and consciousness, wherein the mind is placed on the material side of the ontological divide. I think that this alternate formulation of the mind-body problem constitutes a valuable intellectual perspective for contemporary Western philosophy. It illuminates the problem from a different angle, and this in turn highlights some of the presuppositions underlying the Western analysis and reveals that in an important sense these presuppositions constitute choices about how to conceptualize the phenomena rather than inherent divisions supported by the phenomena themselves. In particular, the Cartesian identification of mind with the conscious subject will be brought into sharp focus, as well as the related human identification of the self with a constellation of subjective ideas. In section 2 of the present paper, I will give a general overview of the
Indian position, and in section 3 and 4, I will explore some of the theoretical consequences of this alternative dualism and critically compare these consequences with some recent manifestations of the Cartesian model. A primary tenet of the paper is that the classical Indian division between pure consciousness and matter has distinct philosophical interests, especially with respect to current discussion on the relationship between consciousness and mental representation, as well as the endeavor to give a concept and or naturalistic account of mentality. The philosophical interest of this alternative dualism is at least partially due to the fact that Descartes between mind and matter has proved extremely adaptable and reappears under a variety of contemporary issues. For example, Starley, 1980, accuses proponents of strong AI artificial intelligence of embracing a rigid separation between mind and matter, since they view the mind as a program of rules for symbol manipulation, and this is to treat the mind as an abstract formalism fundamentally independent of the physical medium in which it happens to be instantiated. Thus, certain advocates of the very recent discipline of AI seem committed to a strict separation between the mental and the physical. In a related journal, when the computational and formal treatments of mind advocated by cognitive science and AI are by nature uh, even when considered as a level of physical instantiation, and as such they seem to say nothing about the real meanings or semantical contents which are consequently mental. Indeed, the deep theoretical gulf between syntax and semantics can be viewed as a highly specialized and refined variation on Descartes' theme. Syntax at the level of actual tokens in a system of physical characters, while semantical contents seem to be something uh, distinctly cognitive, and the connection between the two, at least with respect to computational theories of mind and natural language processing, is a very problematic issue. Sāṅkhya dualism. The Sāṅkhya school or Darsana is one of the oldest philosophical traditions of India, and many of its ideas are traceable to the Rig Veda and the early Upanishads. Its historical founder is Kapila. To the original Sāṅkhya Sutras, he is said to have written during the 6th or 7th century. According to the Sāṅkhya Yoga view, the ultimate principle underlying matter is Prakriti, the metaphysical substrate supporting all material phenomena. The mind is deemed to be a part of the material world and hence to be metaphysically grounded in Prakriti. The body is also part of the realm of Prakriti, and thus mind and body are held to be of the same metaphysical substance. In the most general connotation, the term mind in Western philosophy corresponds to the combination of complex of three faculties recognized in Sāṅkhya Yoga taxonomy, namely Manas, Buddhi, and Ankara, whose respective significance will be briefly outlined below. Manas, which is often translated directly as mind, though it is only a single uh, aspect of the mental reflex, is viewed essentially as an organ. The special organ of cognition, just as the eyes are the special organs of sight, indeed, Manas is held to be intimately connected with perception, since the raw data supplied by the senses must be ordered and characterized with respect to a conceptual scheme before various objects can be perceived as member of their respective categories and as inhabiting a world characterized by the systematic and distinguishable attributes normally perceived. In addition to its perceptual activities, Manas is held to be responsible for the cognitive function, deliberation and decision. It is closely allied to buddhi, which is somewhat roughly translated as the faculty of intellect or reason. Buddhi just Please find your paper. okay, ma'am. Just concluding. Okay.
So in a variety of respects, the ancient Sāṅkhya Yoga version of dualism provides a more fallacious dividing line between substance than does Cartesian parsing of mind and matter. Descartes' picture of consciousness and the mind has had a tremendous influence on the development of Western thought. To a large extent, it still defines the term in which the mind-body problem is conceived, and it colors many contemporary notions of mental content and representation. In this sense, I think that the Sāṅkhya Yoga view is at least as worthy of serious philosophical attention. A far wider range of cognitive phenomena are made available to naturalistic explanation on the Sāṅkhya Yoga account simply because the mind is included in the physical world, but at the same time the unique and autonomous status of consciousness subjectivity is preserved. Of course, dualism of any flavor tends to be a theoretically distasteful, and this is equally true of the Indian picture. Thus, a primary motivation for examining this ancient philosophical system lies not in defining another type of polarity between substances, but rather in providing a different framework within which to consider issues such as the mind-body problem, which will in turn serve to articulate the dilemmas that a satisfactory form of monism must address. By conceiving the problem along slightly different lines, the Sāṅkhya Yoga view already solves some of the difficulties which would haunt a naturalized version of Descartes. Thank you. Thank you so much, Shubham. And our next speaker is Rahul Kumar Rai. Rahul, आप अपना presentation start करें. आपके पास 5 minutes हैं. जी मैम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए मैं राहुल कुमार राय, शोध छात्र दर्शन एवं धर्म विभाग। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है मूल्यपरक अध्ययन के संदर्भ में योग एक दृष्टि। यहाँ मैंने योग के बारे में चूंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है पहले सेशंस में, और बहुत कुछ नया कहने को नहीं है। अगर सब कुछ डिफाइन करें तो अष्टांग योग की खासकर बात करें तो उसके अंगों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि मैं योग को एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास किया है मैंने, और यहाँ मैंने योग को एक मूल्य के रूप में देखने का प्रयास किया है। इस क्रम में मैंने सबसे पहले मूल्य को बताया है कि मूल्य का अर्थ क्या है, और पुनः योग के पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैंने मूल्य के रूप में योग के अलग अलग प्रयोग को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ अगर शॉर्ट में कहें तो मूल्य को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि मूल्यत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हम यहाँ उत्कर्ष से ले सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के उत्कर्ष का जो द्योतक है वही मूल्य है। और इसी क्रम में योग पे थोड़ा सा योग को डिफाइन करने की बात करें तो योग के इतिहास में योग के 2-3 तरह के अर्थ देखने को मिलते हैं। एक अर्थ जो युज समाधव करके लिया जाता है, और दूसरा योग का अर्थ युजिर योगे करके लिया जाता है, और तीसरा योग का प्रयोग युज संयमने करके आता है। किंतु यहाँ मेरा उद्देश्य योग के युज समाधव अर्थ को मैंने लिया है यहाँ, और जिसका अर्थ है कि यहाँ युज समाधव मतलब योग को समाधि के रूप में लिया गया, अर्थात अष्टांग योग जो पतंजलि का अष्टांग योग है, यहाँ मैंने उसका वो करा है। और उसके अपने कारण भी हैं, जैसे कि यहाँ अर्थ चूंकि मेरा उद्देश्य मूल्य के रूप में वो करना है, तो और यहाँ मैं संयोजक योग का जो संयोजक अर्थ है वो नहीं लेना चाहता हूँ। युज समाधव जो अर्थ है वो वियोजक अर्थ है। यहाँ पुरुष प्रकृति के वियोजन से वियोजन में विवेक ख्याति प्राप्त करके और उसका वो ज्ञान हो जाना और फिर समाधि तक पहुंचना, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति करना। तो यहाँ पहला तो मूल्य का एक प्रयोग होता है साध्य साधन के अर्थ में, तो मैंने मूल्य को यहाँ उस अर्थ में रखा है, योग को मूल्य के उस संदर्भ में रखने का प्रयास किया है कि इसका प्रयोग साध्य के रूप में भी और साधन के रूप में भी किया जा सकता है। साध्य के रूप में इसका जब प्रयोग करते हैं तो इसको हम युज समाधव के अर्थ में लेते हैं, जहाँ योग का अर्थ समाधि है और जो कैवल्य है जो योग का साध्य भी है। और साधन के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ हम योग के अन्य अंगों को ग्रहण करते हैं, जहाँ जो
कैवल्य प्राप्ति में या विवेक ज्ञान की उसमें प्राप्ति में सहायक हैं, जो सहायक यहाँ साधन का कार्य करते हैं। तो यहाँ इस तरह से योग का साधन मूल्य भी है और साध्य मूल्य भी है। दूसरा मूल्य का एक प्रयोग सकारात्मक एवं नकारात्मक अर्थ में भी होता है। तो यहाँ अगर हम योग के अंगों की बात करें तो योग का जो प्रथम अंग है यम, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है, तो इसको निषेधात्मक अर्थ में यहाँ लिया जाता है। तो यहाँ मूल्य का नकारात्मक प्रयोग देखने को मिलता है कि यहाँ जैसे अहिंसा की हिंसा नहीं करना चाहिए या फिर अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ मूल्य का नकारात्मक प्रयोग आप देख सकते हैं। अगला जो इसका अंग है योग का नियम, तो नियम में जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की चर्चा है। तो इसको यहाँ देखेंगे हम कि विधेयात्मक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अगर मूल्य के संदर्भ में इसकी बात करें तो यहाँ मूल्य का सकारात्मक प्रयोग देखने को मिलता है कि यहाँ योग के अंग का प्रयोग मूल्य के सकारात्मक रूप में हुआ है। इसी प्रकार अगर एक अन्य योग के मूल्य के प्रयोग की बात करें, जो कि W.K. फ्रैंकेना अपनी पुस्तक में करते हैं कि मूल्य का प्रयोग सिर्फ नैतिक अर्थ में नहीं बल्कि गैर नैतिक अर्थ में भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो वहां देखेंगे कि अगला जो इसका चरण है आसन और प्राणायाम। तो यहाँ आसन और प्राणायाम का जो मूल्य है वो उसका शारीरिक मूल्य है, स्वास्थ्य मूल्य है। तो ये एक नैतिक नहीं बल्कि गैर नैतिक अर्थ है यहाँ, क्योंकि यहाँ कभी कभी शंका हो जाती है कि नैतिक और गैर नैतिक में गैर नैतिक का अर्थ लोग अनैतिक से समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ गैर नैतिक अर्थ अनैतिक नहीं है। यहाँ गैर नैतिक अर्थ है जो नैतिकता के क्षेत्र से परे हो, जो नैतिकता के क्षेत्र के परे किसी अन्य क्षेत्र का मूल्य बताता है, वो गैर नैतिक के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से हम मूल्य के अलग अलग प्रयोग को देखते हैं। और हालांकि यहाँ मेरा उद्देश्य यहाँ किसी कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं है कि योग को साध्य माने कि साधन माने, कि उसको उसका नकारात्मक मूल्य माने कि सकारात्मक मूल्य माने, या फिर उसका निरपेक्ष मूल्य माने कि सापेक्ष मूल्य माने। यहाँ मेरा उद्देश्य योग को मूल्य की तरह एक मूल्य के संदर्भ में अलग अलग किस किस रूप में उसका प्रयोग हो सकता है ये दिखाना है इस पेपर में, और वही दिखाने का प्रयास किया है। और बस, धन्यवाद। Thank you so much, Rahul. And now I would request V. Ramachandran. V. Ramachandran, are you there? It seems he is not there. So the last presentation is from, I think, it's Ramesh Kumar. Ramesh Kumar. Ramesh Kumar. He just left actually. Okay. Ma'am, now I would request Professor Jyotsana. Ramesh Kumar has joined. Okay, Achha, Ramesh Kumar has joined. Okay, Ramesh Kumar, you can start your presentation. Okay, ma'am. Okay. Thank you. You have 5 minutes, and you can take 1 minute more now. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. First of all, pranam all of you, my respected sir, You are ma'am, mute. dear youthful scholars. First of all, I want to wish you, all of you, very, very happy Yoga Day, International Yoga Day. And today my topic is, my topic is very theoretical review article just on my research topic. My research topic is diabetic neuropathy and yoga. So I prepare this article. The title of presentation is an integrated yogic approach for autonomic diabetic neuropathy. I am from M.M.V. Rishikesh and I am here scholars. Just I want to show introduction part. अगर हम देखें कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक 4-5 साल तक किसी को डायबिटीज हो गया है, तो आगे चल के उनके नसों में, पैर के नसों में, हाथ के नसों में, कहीं भी उनके नसों में जो दर्द, झंझनाहट, पेन
ये सब आने लगता है, उसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी टर्म से हम लोग जानते हैं। और ये पूरे कहीं एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में हो सकता है या कहीं पे पूरे शरीर में भी ये हो सकता है। अगर इसकी प्रिविलेंस देखी जाए तो लगभग जो वेस्ट रीजन है हमारा, जो पश्चिम के देश हैं, उसमें कम है, लगभग 1 से 2% की प्रिविलेंस पाई जाती है। लेकिन इंडिया में लगभग 4 से 4.3% इसका प्रिविलेंस देखा गया है रिसर्च के द्वारा, रिसर्च आर्टिकल्स में देखे जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कार्डियोवास्कुलर डेथ आर प्रोबेबली मोर कॉमन इन इंडियन, ये जो हमारा एशियन कंट्रीज है उसमें ज्यादा प्रिवलेंस पाया जा रहा है डायबिटिक के जो लोग हैं, उन लोगों में ज्यादा डायबिटीज पाया जाता है इन एशियन कंट्रीज में। अगर हम इनको बांटना चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी को, तो हम 4 भागों में बांट सकते हैं इसको। पहले पार्ट को कहते हैं कि स्मॉल फाइबर प्रोमिनेंट न्यूरोपैथी, जो कि हमारे किसी एक छोटे से पार्ट्स में, नस में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है शुगर के द्वारा, उसको स्मॉल फाइबर प्रोमिनेंट न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरा है रेडिकुलोपैथी, जो नस के जड़ों में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमारे जो नस के जड़ कहाँ पे, जैसे कि हमारे जॉइंट्स में, थाई के जॉइंट में, आर्म्स के जॉइंट में, तो यहाँ से जो अगर प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसे हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। और एक है तीसरा मोनो न्यूरोपैथी, जो कि कोई एक छोटे से अंग विशेष में ही उसका असर देखा जाता है। और एक है, और चौथा लास्ट है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, उसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑल ओवर इसका इफेक्ट पाया जाता है, तो इसी को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जस्ट हम हमारे हाथ पैरों में जलन, झंझनाहट, नंबनेस, सुन्नपन ये होती है। हमने जो रिसर्च पेपर तैयार किया उसमें हमने जो मेथडोलॉजी अपनाया है, उसमें हमने दो सर्च इंजन से आर्टिकल सेलेक्ट किए, पबमेड और स्कॉलर्स स्कूल से, और कुछ की टर्म्स यूज किए जैसे कि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड योगा, डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड योगा, ऐसे ऐसे करके की टर्म्स यूज किए। और हमने यूज किया कि फुल फ्री टेक्स्ट जो हमें अवेलेबल है वही लेंगे, और RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, कंट्रोल ट्रायल, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के आर्टिकल्स थे उसी को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हमारा जो रिव्यू का जो स्ट्रेंथ है, हमने देखा कि जो योग और जो स्टैंडर्ड केयर है, अगर दोनों को साथ में मिलाकर थेरेपी दी जाती है तो लोगों में ज्यादा उसका इफेक्ट आ रहा है, बजाय हम एलोन स्टैंडर्ड केयर दे रहे हैं। तो दोनों को अगर कंबाइन करके हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर इस स्टडी की जो लिमिटेशंस है कि इसमें हमने ज़्यादा सर्च इंजन जो है उसका सर्च नहीं किया है आर्टिकल्स का, और जो फ्री टेक्स्ट अवेलेबल थे उसी को इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ हमने जो और भी की टर्म्स हो सकते थे वो नहीं किया है। तो ये लिमिटेशंस है इस स्टडी के। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन में यही हमने देखा है इस स्टडी में कि जो न्यूरोपैथी के पेशेंट हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी स्पेशली, अगर उनको हम योग और स्टैंडर्ड केयर के साथ ट्रीट करें तो उनको जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है डायबिटीज, तो उसे हम ट्रीट करने में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं बजाय एलोन किसी स्टैंडर्ड केयर के। और अभी इसमें आगे रिसर्च की ज़रूरत और ज़्यादा है, और इसमें मैं भी काम कर ही रहा हूँ इसी क्षेत्र में। तो साथ ही साथ इसमें आगे जो रिसर्चर हैं आगे आने वाले, तो उनसे ये हम सजेशन दे सकते हैं कि बड़े सैंपल साइज पे इस रिसर्च को किया जाए, योग को लेकर के और स्टैंडर्ड केयर को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी हो, तभी हम समाज को कुछ आउटपुट बता सकते हैं कि हम योग से लाभ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू मैम, इतना ही है मेरा प्रेजेंटेशन।
Ramesh ji, are you done? Yes, ma'am, I am done. Okay, thank you so much, Ramesh ji. And next we have Shikha Chaube. Next speaker is Shikha Chaube. Shikha, are you there? Shikha Chaube. Shikha Chaube. So it seems Shikha is not there. मैम आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स दें और हम इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाएं. प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव मैम, अनम्यूट करिए मैडम का आवाज नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा. मैम को बोलूं क्या? आवाज आ रही है क्या? जाके तो देखा जाए. मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बस करें, बस बस शुरू कर दीजिए आप. हाँ मैम. जा रही है. संक्षेप में एकदम. Thank you so much, Priyanka ji, for inviting me. Or all the papers were very good. Some of them are very. बहुत अच्छे आज सभी के पेपर्स थे. और जितने भी पेपर प्रेजेंट हुए हैं डेफिनेटली उन्होंने योग के डिफरेंट एस्पेक्ट को, विभिन्न पक्षों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसकी व्याख्या की है. और निश्चित रूप से आप सभी के पेपर बहुत अच्छे रहे हैं. और चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी को एक्सप्लेन किया हो, एंजाइटी को एक्सप्लेन किया हो, स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया हो, या अन्य सभी पक्षों को भी एक्सप्लेन किया हो. There were 13 papers have been presented. और कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर टी पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और बहुत अच्छा आप सभी ने प्रेजेंट किया है.